1940 में अब हमने देखा कि लाहौर रेजोल्यूशन आई. Hindu media projected it as Pakistan resolution in order to taunt the Muslim League, but then it was accepted by Muslim media as Pakistan resolution. So Pakistan resolution was passed in 1940, and in 1941 Atlantic Charter took place, where two leaders of the two superpowers at that time, Britain and America, they decided that after the war, World War II, Britain and the other European powers would make sure to decolonize the world. Then 1942, Cripps mission came to India, and the mission offered dominion status in return of Indian support in war. Then it was 1942, after the failure of Cripps mission, Congress launched its last fourth leg of non-cooperation movement, जिसको हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक भी कहते हैं, Quit India movement, and that happened in 1922. 1942, and because of that movement, Gandhi and the other Congress leaders, they were imprisoned by the British. So it was in the jail that Gandhi started writing letters to Quaid-e-Azam, Muhammad Ali Jinnah, because in the absence of Congress, Muslim League had become a very powerful party, and it was winning every other by-election on Muslim seats. And now, it was a different league. It wasn't a league before 1940 resolution. Now it was demanding Pakistan. So it was becoming famous all over India. Thus, Gandhi was forced to write letters to Quaid-e-Azam in order to convince him to join hands with Congress for joint effort for freedom. But remember one thing, in 1928 Nehru report, and Quaid-e-Azam famously said this is parting of the ways. This also meant that Quaid-e-Azam would never make an attempt for reconciliation. So this is now happening once more, that Gandhi and Congress, because of the fame and popularity of Muslim League, they were trying to convince Quaid-e-Azam to join hand for the freedom of India, and Quaid-e-Azam wasn't ready for it, because Quaid-e-Azam once said that this is parting of the ways. Now he meant it. So he wrote many letters to Quaid-e-Azam, and then there was a Congress leader whose name was Chakravarti Rajgopalacharya. He was a Congress leader and a companion of Gandhi. He took that task to narrow down that bridge between Congress and Muslim League, because Muslim League was demanding Pakistan. So with a detailed consultation with Gandhi, Rajgopalacharya Quaid-e-Azam के पास गए एक ऑफ़र लेकर. उस ऑफ़र का लुब्बे लबाब ये है कि first, both of these parties would achieve independence. Once independence was achieved, then Congress and Muslim League, both of them, would make sure to make plebiscite in the Muslim majority areas of northwestern part. And if the Muslims of that area wanted to live in a separate country like Pakistan, they would be given independence. So वो वाले areas जो कि वोट देंगे पाकिस्तान के हक़ में, उनको पाकिस्तान दे दिया जाएगा. इसका मतलब है राजगोपालाचार्य फॉर्मूला क्या था? वो ये था कि पहले तो मिलके हम इंडिपेंडेंस हासिल करें. जब हम इंडिपेंडेंस हासिल करेंगे तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग फैसला करेंगे कि वो इलाके जो मुस्लिम मेजॉरिटी के इलाके हैं, वहाँ पर सिर्फ वोट करवाया जाएगा, ये पूछने के लिए कि क्या ये पाकिस्तान में रहना चाहते हैं कि नहीं. सारे हिंदुस्तान में नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उन इलाकों में जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़ हैं. और अगर जिन इलाकों ने फ़ैसला दे दिया पाकिस्तान के बारे में, उन इलाकों को पाकिस्तान में तब्दील कर दिया जाएगा.
This was an effort to bridge between these two parties. But this offer became the reason for Gandhi Jinnah talks. Gandhi was released from the prison on medical ground in 1944, and then he met with Quaid-e-Azam. And this, in this series of talks, there was a hope all over India that these two leaders, the major leaders of India, they would find out a way to unite India together. But the talks failed. ये बहुत मशहूर है जिसको कहते हैं गांधी जिन्ना टॉक्स 1944 में ये हुई हैं. 1944 में गांधी जिन्ना टॉक्स अनदर इंसिडेंट है 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद. और ये टॉक्स होती रहीं लेकिन ये फेल हो गई. फेल होने की 4 रीज़न्स मैंने लिखी हैं. 4 रीज़न्स में पहले ये है, देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन these two parties or these two leaders whether they should win together first independence or first Pakistan. Gandhi insisted that both of these parties should work hard to get independence from Britain, and once independence was achieved, then they would decide Pakistan. But Jinnah pointed out, how would it be possible that Congress would then agree to Pakistan once freedom was achieved and the British had gone? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि ब्रिटिश चले जाएं और कांग्रेस के पास पूरा हिंदुस्तान आ जाए तो कांग्रेस बड़ी आसानी से पाकिस्तान को दे दे. तो देयर वाज द पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. बोथ ऑफ देम हैड द कॉन्फ्लिक्ट ऑन दिस पॉइंट वेयर द फर्स्ट इंडिपेंडेंस, हु सेड इट? गांधी इंसिस्टेड दैट फर्स्ट इंडिपेंडेंस शुड बी अचीव्ड, बट कायद-ए-आज़म वाज इंसिस्टेंट अपॉन पाकिस्तान. वो कहते थे पहले पाकिस्तान बनेगा फिर इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, क्योंकि इंडिपेंडेंस जब मिल गई तो फिर कांग्रेस तो कभी भी नहीं मानेगी पाकिस्तान के ऊपर. दूसरी जो मेजर पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था, वन नेशन और टू नेशंस. गांधी डिड नॉट अग्री टू दिस पॉइंट दैट इंडिया हैड 2 nations and Muslims made a separate nation. But by this time now, this had become the official policy of League, and in 1940, in a resolution, Pakistan's demand was based upon 2 nation theories. That is why Muslim League could not revert on it. Gandhi was oblivious. Gandhi said to Quaid-e-Azam, how could it be possible that Muslims made a separate nation when they were born in India and they were living here, and their ancestors were born as Hindus in India and they were converted to Hinduism and then they became Muslims? How could it be possible that they made a separate nation only because they were a convert? So how could the body of converts be made a separate nation? And then the second one was, Gandhi could not believe how could be this was like a nation within nation. That was the insistence of Gandhi. But Gandhi could not understand the notion of a separate nation, understand the ideology, because in Hinduism, anyone who is born in India is called Hindu. Anyone who is born in Hindustan is called Hindu. Hindu is not a religion. Hinduism actually is related to land. Anyone who was born in the land of Hindustan is called a Hindu. And actually दरियाए सिंध का नाम ही हिंद होता था. दरियाए सिंध का नाम जब हिंद कहते थे तो हिंद से सिंध बना, और फिर उसके बाद कहते थे कि जो सिंध की लैंड है या हिंद की लैंड है उसको हिंदुस्तान बोलती हैं. एनीवन हु इज़ बॉर्न हियर ही इज़ कॉल्ड हिंदू. Either he is Muslim or Buddha or Jain or somebody else, irrespective of the following of religion, he is Hindu because he's born here. So Gandhi could not understand what Quaid-e-Azam was talking about, a separate ideology. And the second thing was that by that time the notion of nation was attached with state, because Westphalian concept of state, the modern concept of state, is actually about nation. Any nation could be qualified as a nation if that has a state. अब आपको मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि नेशन जो है वो बाउंड्री के साथ लिंक है,
कि ये बाउंड्री बन रही है, इस बाउंड्री के अंदर जितने भी लोग रहते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, दे मेक वन नेशन. So because of these concepts, number one concept, the concept of Hinduism, anyone who is born in Hindustan is a Hindu. And another one is that modern concept of nation is related to state. If any nation or any state, the territoriality which binds the people, the group of people, they make one nation. तो इसलिए ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, बट कायद आज़म न्यू इट वेरी वेल. तो कायद आज़म को टू नेशन थेरी का बहुत अच्छे तरीके से पता था. तो कायद आज़म ऑलवेज कॉल्ड दैट मुस्लिम्स वर अ सेपरेट नेशन. बाय ऑल principles and by all canons, Muslims made a separate nation. That were the words of Qaid Azam. But Gandhi could not understand it. How could a body of converts be a separate nation? This is like nation within nation. And the third one was, who spoke for whom? Gandhi always claimed, even during these meetings, Gandhi claimed that he was speaking on behalf of the whole India. I mean, he was representing all India, including Muslims. On the other hand, Qaid-e-Azam reminded him many a time that Qaid-e-Azam spoke on behalf of the Muslims. I mean, he represented Muslims. And you know, one thing is very important. If Qaid-e-Azam did not represent Muslims, what the hell Gandhi was doing here? Gandhi would never have come to Qaid-e-Azam to meet him or find out the way forward for freedom if Qaid-e-Azam did not hold command over the voice of the people, I mean the Muslims. And another one was, if India became a future federation, in case of future federation, either center or province, which would have more powers. Even Qaid-e-Azam was insistent that province should have even foreign policy and defense, and that was not acceptable for Gandhi. Gandhi believed that center would have more powers, or at least prominent powers. So these were the 4 points of conflicts. Either first, independence of a Pakistan, Muslims, or India was one nation, or India consisted of two nations, two nation theory. Then who spoke for whom? I mean, a representation issue. And then what was the nature of the future federation, either center or province, which would be more powerful? These were the major reasons for Gandhi-Jinnah talks failure. Now 1945, 1945 is a year when the World War II was winding up. And British and America, I mean, after Americans' arrival in this war, the Allies were winning that war, and now they were on the verge of completion of that war. अब वॉर ख़त्म होने वाली थी और प्रॉमिस किया था ब्रिटिश ने कि वो सारी कॉलोनीज़ को छोड़ देंगे, और सबसे पहली कॉलोनी जो ब्रिटिश छोड़ेंगे वो इंडिया होगा. इसलिए 1945 में अब उनको फ़िक्र पड़ गई कि हिंदुस्तान को कैसे छोड़ना है, और उन्होंने प्लान बनाना शुरू कर दिया. उन्होंने सेल्फ रूल देना है. उन्होंने इंडियंस को ये देकर बाकायदा उनके हाथों गवर्नेंस चलाकर देखना है, और फिर उसके बाद अगर कामयाब हुए हिंदुस्तानी या इंडियंस तो फिर वो आराम से छोड़ देंगे. ऐसे नहीं वो जा सकते कि फ़ौरन छोड़ जाएं और पीछे से क्योस मच जाए और सिविल वॉर, जैसे कि अफ़गानिस्तान से जब यूएसएसआर चला गया था तो पीछे कोई ऐसा मजबूत किस्म का गवर्नेंस स्ट्रक्चर नहीं छोड़ा, आपस में सिविल वॉर हो गई. और यहाँ पे सिचुएशन बड़ी राइप थी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के अपोजिंग थे. तो ज़ाहिर है उन्होंने जब सेल्फ रूल देना है, दिखाना है, तो दो चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं किसी भी नेशन को इंडिपेंडेंस देते हुए या कॉन्स्टिट्यूशन में. पहले नंबर पर गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, यानी गवर्नमेंट किस तरह की होनी चाहिए और गवर्नेंस कैसे चलेगी. और दूसरे नंबर पर फेडरेशन कैसे होगी. फेडरेशन का मतलब कि सेंटर के पास कितनी पावर्स होंगी, प्रोविंसेस के पास कितनी पावर्स होंगी, क्या नेचर होगी आपस में ताल्लुकात की, तो इसको फेडरेशन सिंपली बोलते हैं. तो सबसे पहले फिर 1945 में जब वॉर वाज कमिंग क्लोजर टू एंड, at that time Lord Wavel, who was the viceroy,
he called all the parties of India to Shimla. It is also called Shimla conference, but here we will call it Wavel conference, because Wavel plan was offered here. What was Wavel plan? Because Wavel conference, why did I write Wavel conference and not Shimla conference? So that you people could not confuse with Shimla deputation, which was more important, 1906 में जो गया था. तो what was Wavel conference? This was about governance. कैसी गवर्नमेंट होगी ब्रिटिश के जाने के बाद. लेकिन वो गवर्नमेंट ब्रिटिश पहले बनाना चाहते हैं अपने हाथ से, और सारे इंडियंस उस गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स होंगे, उनको बनाएंगे, इंडियंस चलाएंगे. सिर्फ और सिर्फ 2 ही मेंबर्स ब्रिटिश के होंगे उस गवर्नेंस में, एक वायसराय और दूसरा कमांडर इन चीफ. इसके अलावा बाकी सारे मिनिस्टर्स वो इंडियंस होंगे. पहली जो चीज़ उन्होंने रखी वो रखी कि यूनियन ऑफ इंडिया होगा, कोई पाकिस्तान नहीं भाई, इंडिया वुड बी यूनाइटेड, एक इंडिया होगा. दूसरे नंबर पर इस यूनियन ऑफ इंडिया की एक एग्जेक्टिव काउंसिल होगी. अब एग्जेक्टिव काउंसिल क्या है? आजकल के ज़माने में हम उसको बोलते हैं कैबिनेट. कैबिनेट में कौन बैठते हैं? मिनिस्टर्स. और मिनिस्टर्स ही गवर्नेंस को चलाते हैं, मिनिस्टर ही गवर्नमेंट को चलाते हैं, यानी कैबिनेट गवर्नमेंट को चलाती है. तो कैबिनेट का एक दूसरा नाम है एग्जेक्टिव काउंसिल. तो उन्होंने उस वक़्त रखा कि एक एग्जेक्टिव काउंसिल बनाई जाएगी जो इंटरिम होगी, यानी कि टेम्परेरी बेसिस के ऊपर होगी. यानी इंडियंस चलाएंगे इस एग्जेक्टिव काउंसिल को, और अगर अच्छा इन्होंने चलाया तो फिर ब्रिटिश इसी को परमानेंट बना के खुद इंडिया छोड़ देंगे. तो वो जो इंटरिम एग्जेक्टिव काउंसिल होगी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ रखी वो ये थी कि हिंदूज़ और मुस्लिम्स के लिए इक्वल सीट्स रख दी. जो हिंदूज़, अब मुसलमान काफ़ी देर से ये कोशिश कर रहे थे कि 1/3 सीट्स शुड बी एलोकेटेड टू द मुस्लिम्स इन ऑल दी assemblies and councils, but here Muslims were given equal seats to Hindus. तो हिंदूज़ के साथ इक्वल सीट्स, यानी कि जितने मिनिस्टर्स हिंदूज़ के होंगे उतने ही मिनिस्टर्स मुसलमानों के होंगे. एक बहुत बड़ी बात थी. ये इंटरिम एग्जेक्टिव काउंसिल में दूसरे कुछ मेंबर्स माइनॉरिटीज़ के भी होंगे, और यही इंटरिम एग्जेक्टिव काउंसिल जो है पहले चलेगी ब्रिटिश इंडिया जो 1935 का कॉन्स्टिट्यूशन है, और कुछ सालों के बाद ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेगी. जब तक तो ये उस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चली जो ब्रिटिश ने बनाया, उस वक़्त तक ये कहलाएगा डोमिनियन स्टेटस, और जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन आज़ाद बना लेगा फिर ये फ्रीडम कहलाएगा कि मुकम्मल फ्रीडम. हम कह सकते हैं कि यूनियन ऑफ इंडिया पहली एक चीज़ रखी इसमें. दूसरी आपने रखनी है कि इंटरिम एग्जेक्टिव काउंसिल बनाई जाएगी, और उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इक्वल नंबर ऑफ मुस्लिम्स एंड हिंदूज़ वुड बी अपॉइंटेड, और उसके साथ कुछ माइनॉरिटी के मेंबर्स होंगे. मैं यहाँ पे एक फ़र्ज़ करें ये एक एग्जेक्टिव काउंसिल है. इस एग्जेक्टिव काउंसिल में जो हिंदूज़ हैं, फ़र्ज़ करें ये 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं. तो मुसलमान भी ऑलमोस्ट 5 होंगे या 6 होंगे, मुस्लिम्स भी ऑलमोस्ट 5 या 6 होंगे, यानी ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ सीट्स वर गिवन टू मुस्लिम्स एंड हिंदूज. और बीच में कुछ माइनॉरिटी के मेंबर्स भी होंगे. तो ये बहुत बड़ा प्लान था, क्योंकि द ब्रिटिश न्यू दैट कायदे आज़म वुड नेवर अग्री टू यूनियन ऑफ इंडिया. तो इन ऑर्डर टू गिव मुस्लिम्स द फीलिंग ऑफ जॉय कि एटलीस्ट इस इंटरिम एग्जेक्टिव काउंसिल के अंदर, इस कैबिनेट के अंदर, इस गवर्नेंस स्ट्रक्चर में मुसलमानों की इक्वल सीट्स हैं हिंदुओं के, जिससे मुसलमान खुश हो जाएंगे. लेकिन इसके बावजूद जिन्ना ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया. रिजेक्ट करने की एक रीज़न तो ये थी कि इसमें जो माइनॉरिटी मेंबर्स हैं वो हमेशा कांग्रेस का साथ देंगे. माइनॉरिटी मेंबर्स हमेशा कांग्रेस का साथ देंगे किसी भी लॉ बनाने में या किसी भी एक्शन में, क्योंकि कांग्रेस इज़ द लार्जेस्ट पार्टी इन इंडिया. सो द माइनॉरिटी मेंबर्स वुड बी फोर्स्ड टू साइड विद कांग्रेस. तो इस वजह से मुस्लिम्स वुड बी लेफ्ट एज अ परमानेंट माइनॉरिटी हेयर.
तो मुसलमानों के वोट कम हो जाएंगे और मुसलमान अपनी मर्ज़ी का लॉ नहीं बना सकेंगे। जब ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो कोई भी वोटिंग मुसलमान माइनॉरिटी में हो जाएंगे। और दूसरे नंबर पर दूसरा जो एतराज़ कायदे आज़म को हुआ वो ये था कि इन मुस्लिम सीट्स के ऊपर सिर्फ मुस्लिम लीग को इजाज़त होनी चाहिए कि वो मुस्लिम मेंबर्स को अपॉइंट कर सके। कांग्रेस या कोई और पार्टी इस पे मुस्लिम मेंबर्स को अपॉइंट नहीं कर सकती। और भी मुसलमानों की जमातें थीं, जैसे जमीयत उलमा हिंद थी उस वक़्त, या फिर कांग्रेस के अंदर बहुत सारे मुसलमान थे, और कांग्रेस वाले चाह भी रहे थे कि इन सीट्स के ऊपर जो मुसलमानों की सीट है उसमें अबुल कलाम आज़ाद को वहाँ पर हम अपॉइंट करवाएं, जो कायदे आज़म को पसंद नहीं था। कायदे आज़म कहते थे ओनली मुस्लिम लीग शुड बी इंटाइटल्ड टू अपॉइंट मुस्लिम मेंबर्स हियर, बिकॉज मुस्लिम लीग had emerged by that time the most powerful Muslim party। तो ये दो एतराज़ात की वजह से जिन्ना ने इसको रिजेक्ट कर दिया। पहला क्या था, जिन्ना रिजेक्टेड इट बिकॉज लीग शुड अपॉइंट मुस्लिम मेंबर्स। सेकंड, माइनॉरिटी मेंबर्स were likely to support Congress in future, leaving Muslims a permanent minority। इसके बारे में कहा जाता है कि कायदे आज़म के बारे में एक बड़ा ही इमेज बना कि ही इज़ an angry old man। He spoiled single-handedly that plan which gave an opportunity to India for unity, because that was the plan where all the Indian parties could be united at one platform, and it could have been accepted by Qaeda Azam, but Qaeda Azam did not accept it. So the British also had a very different view of Qaeda Azam, that he is a disgruntled old man. But you know, if we look deep into these proposals, Qaeda Azam was not at all wrong. Really, in future, Muslims would never be able to get their laws passed, as minority members would always stand by Congress, and then Congress would have the entitlement to appoint their own members। से इसमें से 2 मेंबर्स भी कांग्रेस के अपने अपॉइंट किए हुए होते तो वो सारे कांग्रेस को ही वोट देते और मुस्लिम लीग के पास बिल्कुल ना होने के बराबर मेंबर्स हो जाते, तो ये कोई भी लॉ नहीं बना सकते थे, कोई भी एक्शन नहीं ले सकते थे। तो दैट वाज रियली अगेंस्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। So for these two reasons, this governance structure was rejected by Qaeda-Azam, but that remained there। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लीग ने कहा कि हम नहीं इसमें शामिल हैं और कांग्रेस ने मान लिया तो ब्रिटिश ने इसको बिल्कुल स्क्रैप कर दिया। उन्होंने कहा जी नहीं, 1945-46 में इलेक्शंस होंगे और उन इलेक्शंस की बेसिस के ऊपर जो पार्टी जीतेंगी उनको यहाँ एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अपने मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए कहेंगे हम लोग।